Okay, class 11. Now we are in motion in a straight line, chapter number 3, physics. So today we will learn distance and displacement. Distance and displacement. Distance and displacement. आज हम करेंगे distance and displacement. So what is distance? Distance, it is the length of the actual path. It is the length of the actual path. It is the length of actual path traversed by the object between its initial and final position. Okay, distance means the length of actual path traversed by the object between its initial and final position. Now we consider a triangular path. हम triangular path consider करेंगे. तो इसमें this is point A, this is point B, and this is point C. Now object move from A to C and then C to B. What will be the distance? So distance will be distance traversed equals to, in this situation, AC plus CB. यहाँ पर होगा AC plus CB is the actual path length of the object. Now object and after reaching point B, when object move to B to A, then distance traverse will be, उसके बाद distance traverse होगा AC plus CB plus BA. This is the distance traversed by object. Now distance is a scalar quantity. Distance is a scalar quantity. Distance is scalar quantity because it has only magnitude, no direction. मतलब डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्टेंस को स्केलर क्वांटिटी कहते हैं क्योंकि उसका खाली मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है. डिस्टेंस का खाली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी. नाउ डिस्टेंस covered is always positive or zero. मतलब डिस्टेंस कवर्ड हमेशा पॉजिटिव और जीरो होता है. अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वहाँ पर पॉजिटिव होता है, अगर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट वहाँ पर जीरो डिस्टेंस होता है. सो ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर. इन SI सिस्टम डिस्टेंस का मेजरिंग यूनिट है मीटर. इन CGS यूनिट ऑफ
distance is centimeter. CGS system में now the measuring unit of distance is centimeter. Now this is the case of distance. Now next is displacement. Displacement is the displacement of an object is the change in position in the position of an object, change in the position of an object in a fixed direction, मतलब डिस्प्लेसमेंट कहाँ पर होता है, एक फिक्स डायरेक्शन में होता है. सो इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, traversed by an object. Now we consider that triangle. वही ट्रायंगल कंसिडर करेंगे जहाँ पर पॉइंट्स आर A, B and C. Now object move from A to C and then C to B. Now what will be the displacement? Displacement is AB. Now displacement has fixed direction. The distance traveled by an object has fixed direction. मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट फिक्स डायरेक्शन में ट्रैवल करता है तो उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं. कोई भी ऑब्जेक्ट फिक्स डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं तो उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवर्स बाय एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेसमेंट. नाउ डिस्प्लेसमेंट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. मतलब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है. सो डिस्प्लेसमेंट may be positive, displacement may be positive, negative or zero. Now when the displacement is positive, ये केस में जाएंगे. When the object move towards right, in time t1 and t2, then the displacement is positive. When the object, and this is number one case, when the objects move towards right, in time t1 and t2, its displacement
displacement is positive. Now consider a straight path, one dimensional path. ये origin है, this point is A और ये point B है. Now the direction is from left to right, towards right. Now this position is x1 and this position is x2. Now we have to calculate the displacement AB. So displacement AB will be, now total length, this length is x2. ये होगा x1, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, O से A तक का डिस्टेंस, ये होगा x1. नाउ डिस्प्लेसमेंट AB निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, AB इक्वल्स टू OB माइनस OA. यहाँ पर होगा OB से OA को घटाना है तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा. तो AB इक्वल्स टू OB इज x2 minus OA is x1. This is greater than 0 because the length OB is greater than OA. Here this is positive. Why positive? क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि x2 is greater than x1. यहाँ पर x2 is greater than x1 है. Now next case, when the object move towards left in time t1 and t2. When, number 2, when the object move towards left in time t1 and t2, its displacement is negative. यहाँ का डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाएगा. वही स्ट्रेट पाथ, वन डायमेंशनल पाथ कंसिडर करेंगे. ये है O. नाउ दिस इज A एंड दिस इज B. इन दिस केस now this is x1 and this is x2. Now this distance is x2. Now OB is x1. यहाँ पर OB x1 है तो AB कैलकुलेट करना है हमको. टुवर्ड्स लेफ्ट, यहाँ पर AB कैलकुलेट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट होगा x2 माइनस x1. तो x2 माइनस x1 इज नेगेटिव. x2 माइनस x1 इज लेस देन 0. वाई लेस देन 0? बिकॉज x2 इज लेस देन x1. यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव, सो इट इज नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट. अगर ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स लेफ्ट मूव कर रहा है तो वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा. ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स राइट मूव कर रहा है तो वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होता है. टूवर्ड्स लेफ्ट इज नेगेटिव एंड टूवर्ड्स राइट इज पॉजिटिव. अब जानना है जीरो डिस्प्लेसमेंट. This is case 3. When the object is at rest or
when the object remains stationary. Or it moves first towards right, or it moves first towards right, and then an equal distance towards left, and then it moves equal distance towards left, its displacement is 0. Its displacement is 0. Suppose if you consider the same path O, A, B. Now in first case the object moved from O to A. Now this is x1, and then it returned back from A to O. This is x2. In this situation, now AB displacement equals to x2 minus x1 equals to 0. Why 0? Because x2 equals to x1. Both the distance are same. So in this case the displacement will be 0. ये केस में displacement 0 हो जाएगा. अगर फर्स्ट टूवर्ड्स राइट जितना डिस्टेंस कवर किया तो टूवर्ड्स लेफ्ट भी उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा. और when the object remains stationary or object at rest, the displacement will be 0. Now next topic is speed. Okay, speed. What is speed? The rate of change of an object, the rate of change of position of an object in time, object with time in any direction is called speed. मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज करेगा विथ टाइम इन एनी डायरेक्शन, मतलब कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, तो उस समय वो फिजिकल क्वांटिटी को कहते हैं स्पीड. सो इन स्पीड it is equal to the distance traveled by, it is equal to the distance traveled by an object in time t. So in mathematical form we can write speed equals to distance traveled by time taken, or simply we write time. This is the definition of speed, means the rate of change of position of an object with time in any direction is speed. मतलब कोई ऑब्जेक्ट
पोजीशन चेंज करता है विथ टाइम इन एनी डायरेक्शन, मतलब कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं, एनी डायरेक्शन में पोजीशन चेंज करता है टाइम के साथ साथ, तो वो फिजिकल क्वांटिटी है स्पीड। और वी कैन से दैट इट इज़ इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इन टाइम टी, उसको भी स्पीड कहते हैं। सो स्पीड इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल टू टाइम टेकन इज स्पीड। नाउ ऐसा यूनिट ऑफ, पहले लिखेंगे स्पीड is a scalar quantity because it has only magnitude but no direction, मतलब ये इसका डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्पीड में भी पॉजिटिव और जीरो, बट it cannot be negative. स्पीड पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, लेकिन नेगेटिव नहीं होता है। तो ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। In short form we can write meter per second. In CGS system, CGS unit of speed is centimeter per second. In short form we can write centimeter per second. Now there are different type of speed. So different type of speed. Different type of speed. One is uniform speed. And next is variable or non-uniform speed. Variable speed, इसको नॉन यूनिफॉर्म भी बोल सकते हैं। एंड थर्ड वन इज एवरेज स्पीड। ओके, फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट यूनिफॉर्म स्पीड। पहले हम यूनिफॉर्म स्पीड करेंगे। Okay, uniform speed, an object is said to be uniform speed. Uniform speed, an object is said to be moving with uniform speed. An object is said to be moving with uniform speed if it covers equal distance in equal interval of time. If it covers equal distance in equal interval
ऑफ टाइम, ये हुआ यूनिफॉर्म स्पीड। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। Equal interval of time, however small this time interval may be. Now next is variable speed. Variable speed, an object is said to be moving with variable speed if it covers unequal distance in equal interval of time. If it covers unequal distance in equal interval of time, तो ये हुआ वेरिएबल स्पीड। अगर कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो उससे बोलते हैं वेरिएबल स्पीड। फर्स्ट मतलब ये पाथ है, इट इज़ द पाथ। ना फर्स्ट 2 सेकेंड इट कवर्स 5 मीटर, नेक्स्ट 2 सेकेंड it covers 7 meter, next 2 second it covers 3 meter. Now the distance A are unequal but times are equal. 4 minus 2 is 2, 6 minus 4 is 2, means in equal interval of time object covers unequal distance. So इसको बोलते हैं variable speed. So last one is average speed. Average speed. For an object moving with variable speed, for an object moving with variable speed, the average speed is the total distance traveled by the object divided by the total time. The average speed is the total distance traveled by an object in total time. तो ये हुआ एवरेज स्पीड। मतलब एवरेज स्पीड कहाँ से कहाँ से आएगा, जब कोई भी ऑब्जेक्ट वेरिएबल स्पीड में हो, किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड वेरिएबल हो तो वेरिएबल स्पीड में से ये वेरिएबल स्पीड को जोड़ के टोटल टाइम से वेरिएबल स्पीड मतलब वेरिएबल स्पीड से एवरेज स्पीड आएगा। तो वहाँ का टोटल डिस्टेंस जितना होगा
उसको टोटल टाइम से डिवाइड करना है तो आएगा हमको आएगा एवरेज स्पीड। सो देयरफॉर एवरेज स्पीड, सो एवरेज स्पीड है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय टोटल टाइम टेकन, ये हुआ एवरेज स्पीड। मतलब जहाँ पर वेरिएबल स्पीड है वहीं से एवरेज स्पीड आएगा, जहाँ पर वेरिएबल स्पीड है वहीं से स्पीड आएगा। जो वेरिएबल स्पीड मतलब वहाँ का जो टोटल डिस्टेंस कवर करेगा वो टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करना है एवरेज स्पीड निकालने के लिए। और एक स्पीड है उसको बोलते हैं इंस्टैंटेनियस स्पीड। Instantaneous speed, so instantaneous speed, the speed of an object at any particular instant, the speed of an object at any particular instant of time or at a particular point of its path, is called instantaneous speed. मतलब the speed of an object at any particular instant of time, मतलब और at a particular point of its path, मतलब ये है टोटल पाथ। तो किसी भी पॉइंट का अगर हम स्पीड कैलकुलेट करेंगे कोई पर्टिकुलर पॉइंट का, तो वो स्पीड को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इस इंस्टेंटेनियस स्पीड इंस्टेंटली मतलब वहाँ का इंस्टेंट स्पीड है। इंस्टेंट स्पीड मतलब वो पर्टिकुलर पॉइंट का वो स्पीड में टाइम कितना होगा, टाइम टेंस टू 0 हो जाएगा। मतलब इतना छोटा टाइम में ऑब्जेक्ट जो स्पीड अटेंड करेगा वो स्पीड को इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड इज रिप्रेजेंटेड बाय v equals to limiting value. Now time limit is del t tends to 0। तो ये हो गया change in the position of an object in any direction, so del t। अगर इसको मतलब हटा ही दिया जाए तो v equals to dx by dt। This is the instantaneous speed, expression for instantaneous speed। पर्टिकुलर पॉइंट का स्पीड कैलकुलेट करना है तो उसको इंस्टेंटेनियस कैसे, टाइम लेके टेंस टू 0 टाइम, नियर अबाउट 0 टाइम्स ले मतलब कंसीडर करके
वो पर्टिकुलर पॉइंट का, पाथ का पर्टिकुलर पॉइंट का जब इसको स्पीड कैलकुलेट करेंगे तो वो स्पीड को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके, दिस मच फॉर टुडे, थैंक यू।